Good morning, friends. So, in last lecture, we completed 3 accounting standards AS 26, 25 and 10. 10 के प्रॉब्लम्स बाकी थे क्या? है ना? हाँ. Come to problem number 1. पेज नंबर 40 पे आपके. पेज नंबर 40. First problem. Answer the following. A limited had following assets. Calculate depreciation for the year ended 31st March 2020 for each asset as per AS 10 revised. Machinery purchased for 10 lakhs on 1st April 2015 and residual value after useful life of 5 years based on 2015 prices is 10 lakhs. Land for 50 lakhs. A machinery is constructed for 5 lakhs for its own use. Useful life is 10 years. Construction is completed on 1st April 2019, but the company does not begin using the machine until 31st March 2020. Machinery purchased on 1st April 2017 for 50,000 with useful life of 5 years and residual value is nil. On 1st April 2019, management decided to use this asset for further 2 years only. सिंपल है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है. बताओ लाइन से एक एक. पहला क्या करें? मशीनरी परचेस किया 10 लाख के लिए on 1st April 2015 and residual value after useful life of 5 years based on 2015 prices is 10 lakhs. अगर मशीनरी परचेस ही 10 लाख के लिए किया है और उसका रेसिडुअल वैल्यू भी 10 लाख है तो डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं. विल देयर बी एनी डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं. सो 10 लाख की मशीन खरीदी हुई है, 10 लाख की है रेसिडुअल वैल्यू, सो उस केस में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. लैंड 50 लाख रुपए, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, इट इज नेवर डेप्रिशिएटेड, नील. Machinery is constructed for 5 lakhs for its own use. Useful life is 10 years. Construction is completed on 1st April 2019, but the company does not begin using the machine until 31st March 2020. इस केस में क्या होगा? अभी बात यह है कि from when do you charge the depreciation? From the date machine is ready to use or from the date machine is put to use? No, not put to use. When it is ready to use. जब ready to use है तब से depreciation आता है. तुम एसेट रेडी हो गया, तुम 2 साल यूज नहीं किए तो 2 साल का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा क्या? ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू तो कम होना ही है. सो आप यूज करो मत करो, फ्रॉम द डेट इट इज रेडी टू यूज, इट इज अवेलेबल फॉर यूज, इट विल बी डेप्रिशिएटेड. सो उस केस में 5 लाख 10 साल की लाइफ बोला है तो it will be 50,000 rupees. Machinery purchased on 1st of April 2017 for 50,000 with useful life of 5 years and residual value is nil. On 1st April 2019, management decided to use this asset for further 2 years only. अब 1 अप्रैल 2017 से लेके करंट ईयर तक अगर आएंगे तो 2 साल हो चुके हैं. अब 2 साल में 20,000 का डेप्रिसिएशन जा चुका है तो बच गए 30,000 और अब आगे की लाइफ 3 साल नहीं 2 ही साल है तो कितना आएगा? 15,000 आएगा. ये सॉल्व करा के दूं या तुम लिख लोगे वहीं के वहीं? तो पहले इसका आंसर नील. लैंड उसके सामने लिख दो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट. थर्ड केस में 50,000 और वहां लिख दो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज फ्रॉम द डेट द मशीन इज अवेलेबल फॉर यूज और रेडी फॉर यूज. आया? एंड लास्ट वन,
15,000 कैसे आया 15,000? पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन 20,000 गया, 10,000, फिर बच गया 30,000, बचे हुआ 30,000 बचे हुए 2 साल में, तो इट विल बी 15,000 ईच ईयर. आया? नेक्स्ट. A limited has contracted with supplier to purchase machinery which is to be installed at its new plant in 4 months time. Special foundations were required for the machinery which were to be prepared within the supply lead time. The cost of the preparation and laying foundations were 2,10,000. These activities were supervised by an architect during the entire period who is employed for this purpose at a salary of 35,000 per month. Machinery was purchased for 1,27,50,000 and a sum of 2,12,500 was incurred towards transportation charges to bring the machinery to the plant site. An engineer was appointed at a fees of 37,500 to supervise the installation of machinery at the plant site. You are required to ascertain the amount at which machinery should be capitalized in the books of A Limited. करो कैलकुलेशन, कैलसी पे भी आ जाएगा कितना अमाउंट कैपिटलाइज करना है. वन करोड़ क्या क्या लिए मेरे को बताओ. एक तो परचेस कॉस्ट 1,27,50,000, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2,12,500, फिर इंस्टॉलेशन फीस ऑफ इंजीनियर 37,500, और वो फाउंडेशन जो बनाया 2,10,000, 2,10,000 ना, एंड सैलरी 4 महीने की देनी पड़ेगी ना आर्किटेक्ट को, तो 35, 1,40,000. सो टोटल इज 1,33,50,000. सॉल्व करना है, लिखना है, लिख लेते हैं ना, लिखो. एज पर AS 10, as per AS 10, cost of PPE includes
not only cost of purchase, not only cost of purchase, but also the costs incurred in bringing the assets to their present location and condition. Present location and condition. Therefore, the cost of the machinery will be ascertained as under. Right hand side corner, rupees. Purchase price, लाइन से लिख दो ना वो सब. Purchase price 1,27,50,000. दिए हुए सारे के सारे वो एक्सपेंसेस जो है वो हेडिंग जो है वो ऐड होंगे ना. ₹1,33,50,000 आया क्या? Next. B Limited, which operates a major chain of retail stores, has acquired a new store location. Everybody please underline a new store location. क्यों अंडरलाइन करने बोला बताता हूं मैं. The new location requires substantial renovation expenditure. Management expects that the renovation will last for
4 months during which the store will be closed. Management has prepared the budget for this period, including expenditure relating to construction and remodeling cost, salary of staff who shall be preparing the store before its opening, and related utilities cost. How would such expenditure be treated in the books of B Limited? क्या करना चाहिए इस खर्चे को? कैपिटलाइज करना चाहिए कि रेवेन्यू बोल के P&L में डेबिट करना चाहिए? मैंने तुमको अंडरलाइन करा के दिया, वो सेंटेंस का रिलेवेंस बहुत बड़ा है. देखो, है वो स्टोर तुम नए जगह पे शिफ्ट अगर कर रहे हो, है वो स्टोर नए जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो P&L में जाता है. मैंने एग्जांपल दिया था आपको पिछले लेक्चर में कि क्लासरूम अगर यहाँ से मैंने ऊपर के फ्लोर पे शिफ्ट किया, बेंचेस अगर ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो P&L में जाएगा. बट यहाँ पे बेटा है वो स्टोर कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा, नया स्टोर बना रहे. अब नया स्टोर बना रहे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. तो उसके लिए जो भी खर्चा किया जाएगा इट विल बी ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर. यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं अलग तरीके से भी पूछ सकता हूँ. Existing store location is changed and now it is to be shifted to some other new location, and for that the cost is incurred to shift the location from one place to another place. That cost will be debited to P&L account, that will be revenue expenditure. But यहाँ पे नया स्टोर ही बना रहे ना तुम, अब उसके लिए 4 महीने वहाँ स्टोर तुम चला नहीं सकते. है वो जो कुछ भी जगह रहेगी अभी वो बंद रखना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना पड़ेगा, रिस्ट्रक्चरिंग आ गया, रिकंस्ट्रक्शन आ गया, तो ये सब कॉस्ट है उसमें इन्वॉल्व. तो ये कॉस्ट का क्या करें? कैपिटलाइज करना पड़ेगा. इट नीड्स टू बी कैपिटलाइज. लिखो, एज पर AS 10 as per AS 10, comma, since a new store is coming into existence, since a new store is coming into existence, which will give future economic benefits, which will give future economic benefits to the organization or to the business enterprise, to the business enterprise, comma, the costs of construction and remodeling should be capitalized as cost of the PPE, cost of the PPE. However, the cost of salary of staff comma
utilities cost are going to be incurred as operating cost even though the new store is not opened, then such costs should be treated as revenue expenditure and expensed out in P&L account and expensed out in profit and loss account. देखा? अब स्टाफ जो है वो तुम्हारा परमानेंट स्टाफ है, तुम स्टोर ओपन करो मत करो, वो तुमको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल के अगर सैलरी देनी पड़ने वाली है तो फिर वो कॉस्ट तो तुम्हारा सैलरी एक्सपेंडिचर P&L में जाएगा. हाँ, तुमने स्पेसिफिकली नए स्टोर के लिए हायर किया और वो काम ही कर रहा है स्टाफ किस पे, वो सिर्फ न्यू स्टोर पे. वो तो न्यू स्टोर नहीं रहता तो वो कॉस्ट तुम इनकर नहीं करते, फिर तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट स्टोर, पीपी की कॉस्ट में ऐड होगा. लेकिन अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है जो एनीवे होने वाला था, देन दैट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और एक प्रॉब्लम है ना, थर्ड प्रॉब्लम. XYZ provided you the following information for the year ended 31st March 2022. Carrying amount of property at the end of the year amounted to 2,16,000. Cost is 2,50,000 and accumulated depreciation 34,000. On this date, the property was revalued and was deemed to have a fair value of 1,90,000. The balance in revaluation surplus relating to previous revaluation gain of this property was 20,000. You are required to calculate revaluation loss as per year 10 and give its treatment in the books of accounts. Very simple. बताओ बेटा, बुक्स में वैल्यू कितना था? 2,16,000, कॉस्ट 2.5 लाख और accumulated depreciation 34,000. So what is the WDV of the asset? 2,16,000. उसका रिवैल्यूएशन कितना कर रहे हैं आप? 1,90,000. बोल तो कितने से कम कर रहे हैं? 26,000 से कम कर रहे हैं. तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन गेन कितना है पहले का? 20,000 है, तो वो पहले तुम रिवर्स करोगे, दैट विल बी डेबिटेड टू दैट 20,000 एंड रिमेनिंग 6,000 विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट. तो रिवैल्यूएशन लॉस एज सच कितना रहेगा? 6,000 रुपये. 6,000 रुपये ना, 26,000 में से 20,000 तो रिवैल्यूएशन गेन के अगेंस्ट एडजस्ट में होगा. कहते हैं नेक्स्ट, an asset that originally cost 76,000 and has accumulated depreciation of 62,000 was disposed of during the year for 4,000. लॉस है. WDV कितना है? 14,000. You sold it for 4,000, so 10,000 rupees loss which will go to profit and loss account. लिखो आंसर. As per AS 10, if there is reduction in value of PPE, on subsequent revaluation,
then to the extent of earlier revaluation gain, then to the extent of earlier revaluation gain, comma, the subsequent revaluation loss should be debited to revaluation surplus account and any further decrease will be debited to profit and loss account. नेक्स्ट लाइन पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखो रुपीज. कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितना लिखोगे? 2,16,000. Fair value on revaluation. Fair value on revaluation $1,90,000. Therefore, total revaluation loss on asset, on PP या property जो भी है, कितना? 26,000. Adjustment towards previous revaluation gain. Adjustment towards previous revaluation gain. $20,000. Therefore, net revaluation loss to be transferred to profit and loss account. Net revaluation loss to be transferred to profit and loss account बोलो 6,000. Number 2, right hand side corner rupees. Original cost of the asset $76,000 less accumulated depreciation
less accumulated depreciation कितना accumulated depreciation 62,000. Therefore carrying amount of the asset $14,000 less sale proceeds $4,000. Therefore loss on disposal of asset $10,000. Next line, as per AS10, any loss on disposal of fixed asset, or PPE should be debited to profit and loss account. That's it. AS19, accounting for leases. Accounting for leases. Yes. गाइज अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत सारे जगह पे लीजेस का रेफरेंस आता है और हम यही बोलते हैं कि वी विल स्टडी दैट इन AS19.
there are two types of leases, finance lease and operating lease, और दो parties होते हैं, lessor and lessee. तो AS19 is basically to understand the accounting treatments of finance as well as operating lease in the books of lessor as well as lessee. Lessor lessee मतलब landlord and tenant, simple words में बोले तो ये जो लेसर और लेसी है, इनके बुक्स में दोनों टाइप के लीजेस का अकाउंटिंग कैसे होना चाहिए, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर AS19. AS19 not only discuss about the accounting treatment for leases, but it also talks about the disclosure requirements in relation to the leases. लीज के रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं वो भी AS19 में दिए हुए हैं. सो AS19 वैसे तो छोटा स्टैंडर्ड है, मतलब अभी अपने को समरी लिखने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट में, मैक्सिमम आधे घंटे में समरी लिख के हो जाएगा, लेकिन है टेक्निकल स्टैंडर्ड, मतलब ये थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसको. इवन स्टडी लीव में जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे ना बेटा, तो ये समरी तो ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि समरी के बेसिस पे तुम सिर्फ एग्जाम में डायरेक्टली जाके पास नहीं हो पाएंगे, ये सिर्फ तुम्हारे रिवीजन पर्पज़ के लिए है. तुम जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो इसको थोड़ा टाइम लगने वाला है AS19 को. इसके प्रॉब्लम्स भी अच्छे से करना, प्रॉब्लम एक बार कर गए तो अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है और जम जाता है, फिर AS दिमाग में क्लियरली आ जाता है कि क्या है. बट भले ही छोटा है, टेक्निकल है, उस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, लेंदी है इसलिए नहीं. ठीक है, लिखो. ऑब्जेक्टिव ऑफ AS19 इज, objective of AS19 is to prescribe the appropriate accounting policies, the appropriate accounting policies and disclosures in relation to finance leases and operating leases, in relation to finance leases and operating leases in the books of the lessor, in the books of the lessor and the lessee. लिखा. Number 2, a lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment
or series of payments comma the right to use an asset, the right to use an asset for an agreed period of time, for an agreed period of time. तो कोई चीज एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जब लेस और लेसी को यूज करने के लिए देता है, ऑब्वियसली फॉर some consideration, that consideration may be paid in lump sum or it may come in installments. आप भी जब फ्लैट रेंट पे लेते हो तो हो सकता है कि पूरा पैसा रेंट का एडवांस में ले ले सामने वाला, या तो फिर मंथली ले. So there may be payment in lump sum or it may be installments, series of payments, but for a particular period of time the use of that asset, use of that property is handed over to lessee. तो दैट इज व्हाट लीज इज, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने को इस एएस में समझना है कि एग्जैक्टली कैसे होगा. दो पार्टीज इन्वॉल्व है, लेसर जो ओनर होता है, लेसी जिसको वो दिया जाता है यूज करने के लिए. दोनों के भी बुक्स में ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, पर ट्रीटमेंट समझ में आने के लिए पहले अपने को टाइप्स ऑफ लीजेस समझ में आना जरूरी है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीजेस. लिखो, एज पर AS 19 there are two types of leases. Finance lease, operating lease. Finance lease, operating lease. What do you mean by finance lease? Transfer of substantially all the risks and rewards incidental to the ownership of the asset. भले ही आप लीज पे दे रहे एसेट को, बट अगर आप सब्सटेंशियली पूरी रिस्क रिवार्ड्स उसके पास ऑन कर रहे हो लेसी को, तो दैट विल बिकम फाइनेंस लीज. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देना है तो हायर परचेस पे कोई भी चीज़ खरीदी तुमने, अब आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ है, भले ही हायर परचेस का टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में से डिलीट हो गया इंटर में से, अकाउंट्स में से, बट हायर परचेस आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो सीखा है ना. सोगा में, सोगा में आपने सीखा हुआ है कि जब हायर परचेस पे गुड्स खरीदते हैं तो बेटा ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड ओनली ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर होता है ओनरशिप. लेकिन मेरे को बताओ, वो ड्यूरिंग उस पीरियड में भी गाड़ी है समझो खरीदी है हायर परचेस पे, गाड़ी यूज कौन करता? जो बायर है, लेसी है, वो यूज करता ना.
गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? लेसी रहेगा ना, वायर ही रहेगा ना। वो तो सिर्फ ऑन पेपर दिखने के लिए ओनरशिप किसकी है? लेसर की है। बट इन सब्सटेंस अगर बात करें तो ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप आर पास्ड ऑन टू द बायर, लेसी. So that is a clear case of, clear example of finance lease. And as against it, what is operating lease? It is a lease other than finance lease. जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है. लिखा? यस. इसी के नीचे चाहिए तो अपन कंटिन्यू करते. सीरियल नंबर नेक्स्ट. Following are the situations leading to finance lease. Following are the situations leading to finance lease. A. The lessor agrees to transfer ownership of the asset to the lessee at the end of the lease term on receipt of nominal sum. B. Lessee has the option to purchase the asset at the end of lease term at a price which is expected to be sufficiently lower than its fair value. आया? अभी देखो, अभी और भी लिखने सिचुएशन, बट ये पहले दो सिचुएशन तो बहुत क्लियर है. पहले सिचुएशन में हमने लिखा द लेसर हैज एग्रीड टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म टू लेसी ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल सम. एक नॉमिनल अमाउंट लेके लेसर लेसी को ओनरशिप पास ऑन कर देगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म. अब मेरे को बोला जो लीज टर्म है, जब लीज कंटिन्यूड रहेगा तो एसेट किसके पास रहने वाला? हाँ, लेसी के पास. यूज कौन करने वाला?
लेसी, एंड लीज टर्म के एंड में ओनरशिप भी उसकी होने वाली, तो एज गुड एज रिस्क एंड रिवार्ड्स पूरे पास ऑन हो गए ना आज ही. सो इजंट इट फाइनेंस लीज. दूसरा भी सेम है, अलग वर्डिंग में रखा है. Where the lessee has the option to purchase the asset at the end of lease term at a price which is substantially sufficiently lower than its fair value. अब समझो कोई एसेट है, कोई बिल्डिंग है जिसका फेयर वैल्यूएशन जस्ट एक एग्जांपल के लिए 10 करोड़ है, एंड 10 साल के लिए तुमने वो मेरे से रेंट पे लिया. 10वें साल के एंड में तुम्हारे पास ऑप्शन है लेसी के पास कि तुम वो 10 करोड़ का जो बिल्डिंग है, फेयर वैल्यू इसका 10 करोड़ है, वो तुमको एंड में मेरे को 50 लाख रुपए देके वो तुम्हारी ओनरशिप हो सकती. अब मेरे को बोलो, मैं क्या येड़ा है क्या ऐसा ट्रांजेक्शन करने को? 50 लाख रुपए में मैं 10 साल बाद ओनरशिप आपको दूंगा, इसका मतलब है कि ये 10 साल में मैं पूरा उसका वैल्यू तुम्हारे से रिकवर करने वाला हूं. वो तो एज गुड एज सेल हो ही गया ना. वो सिर्फ क्या है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीज टर्म के फॉर्म में वो कंटिन्यू हो रहा है. So here again, substantially all the risk and rewards are passed on. So it will also become a finance lease. C. The lease term, the lease term the lease term is for the major part of the economic life of the asset, is for the major part of economic life of the asset. Next, D. At the start of the lease, the present value of minimum lease payments amounts to at least substantially all of the fair value of the leased asset मैं कब आपको ओनरशिप पास ऑन करूंगा 10 करोड़ के प्रॉपर्टी क्या 50 लाख में? जब 10 साल के पीरियड में मैं तुम्हारे से वो एसेट का फेयर वैल्यू रिकवर कर लूंगा ना, तभी होगा ना. तो वही पॉइंट है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट बोल तो क्या था, याद आ रहा है कि टोटल पेमेंट मेड बाय लेसी टू द लेसर. तो जो मिनिमम लीज पेमेंट का पेमेंट कर रहे हैं ओवर लीज टर्म, that is covering the present value of fair value of that asset. वो एसेट का फेयर वैल्यू उतना कवर कर रहा है पूरा. तो जो भी एसेट का फेयर वैल्यू है उतना हम लीज रेंटल के फॉर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं. ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी पैसा लिया जाएगा. जैसे समझो 10 करोड़ का अगर फेयर वैल्यू है आज की डेट में उसका, तो 10 साल में तुम्हारे से मैं 10 करोड़ नहीं लूंगा भाई, मैं तुम्हारे से हो सकता है 13 करोड़ 14 करोड़ रुपए लूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हुए. But over a period of time, I am recovering the fair value of the asset. It is nothing but finance lease. वो finance lease है. अब मेरे को बोलो अपन गोवा गए,
एग्जाम्पल में तो जा ही सकते। अपन 7 दिन के लिए गोवा गए, 7 days। तुम्हारा अटेम्प्ट अभी लंबा है, थोड़ा सा चलो अपने आप को थोड़ा एंथू लाने के लिए, रिजुनवेट करने के लिए हम 7 दिन के लिए गोवा गए, हम बस लेके गए साथ में। अब ये बस में मेरे को बताओ, जो 7 दिन के चार्जेस दे रहे हैं उसमें क्या बस का कॉस्ट कवर कर रहा है क्या, जो बस वाला है वो? तो वो फाइनेंस लीज नहीं है, वो क्या होगा, ऑपरेटिंग लीज होगा। वन मोर, वन मोर, लिखो ई, ई ना। The leased asset is of specialized nature. The leased asset is of a specialized nature such that such that only the lessee can use it. Only the lessee can use it. बरोबर। अभी ऐसा एसेट है जो सिर्फ लेस्सी यूज कर सकता, तो फिर वो तो ऑब्वियसली फाइनेंस लीज ही होगा ना। दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता उस एसेट को, वो तो लेसी के लिए ही बना है। तो सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स किसके हैं, लेसी के। तो इट विल बी फाइनेंस लीज। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 5। Following are the situations leading. Following are the situations leading to operating lease. A. Leasing of general asset. Leasing of general asset. Number 2. Number 2. Lease may not be for a longer period of time. Lease may not be for a longer period of time. Next, ownership of the asset is not transferred. Ownership of the asset is not transferred. Present value of minimum lease payment. Next one. Present value of minimum lease payment is not equal to fair value of the asset, is not equal to fair value of the asset. Next, lessee has no option to purchase the asset. Lessee has no option to purchase the asset. One more.
lease charges are to cover annual return on investment made by the lessor. तो जो जनरल अपन लीज करते हैं, जैसे तुम यहाँ पे आए हो 6 महीने के लिए क्लास के लिए आए, तुम 6 महीने तुमने कोई फ्लैट रेंट पे लिया, इट विल बी ऑपरेटिंग लीज। 6 महीने बाद तुम ओनर नहीं होते, या तुम जो रेंट पे कर रहे हो वो फ्लैट का फेयर रेंट नहीं रहता, राइट। सो दीज आर ऑल ऑपरेटिंग लीजेस। जो गोवा वाला एग्जांपल दिया, लेट्स कीप द फन पार्ट असाइड, 6 दिन के लिए 7 दिन के लिए बस लेके अपन कहीं पिकनिक पे गए, तो वो जो बस रेंट पे ली है ये ऑपरेटिंग लीज रहेगा, यू डू नॉट बिकम ओनर ऑफ द बस। सीरियल नंबर 6th, accounting treatment in the books of lessee. Accounting treatment in the books of lessee is summarized as under. Books of lessee. Finance lease, operating lease. If it is finance lease, guys, it is shown as an asset in the books of lessee, because substantially all the risk and rewards are passed on to the lessee. भले वो owner नहीं बना है, but still it will be shown as an asset. Recognize the lease as an asset and a liability, bracket में, that is amount payable to lessor. एसेट बोल के तो दिखाएंगे ही, और लाइबिलिटी बोल के भी दिखाना पड़ेगा कि तो अमाउंट इज पेएबल टू द लेसर। वो तो एंट्री पास होगी, लीज होल्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट, बिकॉज अमाउंट इज पेएबल टू द लेसर। तो एसेट बोल के भी दिखाएंगे, वो अमाउंट पेएबल है इसलिए लेसर को लाइबिलिटी बोल के क्रेडिट में दिखाएंगे। बी, record at fair value
at the inception or present value of minimum lease payments whichever is lower. Whichever is lower. Provide depreciation as per AS 10. Provide depreciation as per AS 10. लिखा? तो बेटा एसेट किसके बुक्स में दिखाएंगे अगर फाइनेंस लीज है तो? लेसी के. और एसेट उसके बुक्स में आएगा तो डेप्रिसिएशन भी उसी के बुक्स में आएगा. अगर ऑपरेटिंग लीज है तो लेसी की बुक्स का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? रिकॉग्नाइज लीज पेमेंट्स as an expense in profit and loss account on straight line basis unless other basis is justified. कुछ नहीं, ऑपरेटिंग में जो तुम रेंटल पे कर रहे हो वो एक्सपेंस बोल के दिखा दो. अगर 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए है लीज तो फिर तुमको SLM बेसिस पे जाना है. स्ट्रेट लाइन बेसिस में मतलब क्या कि भाई रेंटल जो है उसको स्ट्रेट लाइनिंग में ले आओ, इक्वली उसको स्प्रेड आउट करो ओवर द लीज टर्म. सो दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी. अब जब एसेट ही नहीं दिखाएंगे लेसी की बुक्स में तो डेप्रिसिएशन आएगा क्या? नो. सो डेप्रिसिएशन एंड एसेट ये दोनों भी कहाँ पे आएंगे ऑपरेटिंग लीज के केस में? लेसर के बुक्स में. तो लेसी के बुक्स में सिर्फ अपने को क्या करना है, जो लीज रेंटल पे हो रहा है दैट विल बी शोन एज एक्सपेंस. एनी प्रॉब्लम? Serial number 7. The accounting treatment in the books of lessor is summarized as under. Is summarized as under. Books of
फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। Recognize the amount receivable from lessee bracket at its present value bracket closed as an asset. Recognize the finance income in profit and loss account. मैंने कोई एसेट तुमको फाइनेंस लीज के अंडर लीज पे दिया है, मैं लेसर हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई शो द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम यू एज एन एसेट फॉर मी। मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई इनसे इतना पैसा आना है, कितना पैसा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम यू। तुम्हारे से जो पूरा अमाउंट आना है, पूरा की पूरा मैं रिसीवेबल बोल के नहीं दिखाता, उसका प्रेजेंट वैल्यू जितना है उतना ही मैं रिसीवेबल बोल के दिखाता हूँ, क्यों तो फेयर वैल्यू ही मुझे सिर्फ मिलने वाली है, ऊपर का जो मिलने वाला है वो मेरा इंटरेस्ट इनकम है। तुम मेरे को 14 करोड़ रुपए देने वाले भाई 10 साल में, और 10 साल में देने वाले ना, तो आज की डेट में 14 करोड़ का मेरा एसेट नहीं होता, रिसीवेबल नहीं होता। आज की डेट में मैं रिसीवेबल समझो फेयर वैल्यू 10 लाख है, 10 करोड़ है, वो है प्रॉपर्टी की, मैं 10 करोड़ ही दिखाऊंगा। ऊपर के जो 4 करोड़ है टाइम टू टाइम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम बोल के दिखाया जाएगा, विच विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So you will be showing the amount receivable from lessee at its present value as an asset, receivable बोल के दिखाओगे आप उसको, and जो भी फाइनेंस इनकम मिलेगा ओवर द लीज टर्म दैट विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही अगर ऑपरेटिंग लीज है तो क्या होगा, इफ इट इज ऑपरेटिंग लीज, present the asset under फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बोल के दिखाएंगे ना। ऑपरेटिंग लीज लेसर के बुक्स में फिक्स्ड एसेट बोल के दिखता है। recognize lease income in profit and loss account on straight line basis unless other basis is justified। जो भी रेंटल इनकम आएगा वो इनकम बोल के ले लो। फाइनेंस लीज के केस में जितना रेंटल इनकम आता है वो पूरा इनकम में नहीं आता,
उसमें से जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उतने से अमाउंट रिसीवेबल कम होती जाएगी, एंड जितना इंटरेस्ट का पोर्शन है ओनली दैट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सी, provide depreciation as per AS10. हो गया. लास्ट पॉइंट, लास्ट, ये समझा क्या? लेकिन याद आया क्या कुछ? कभी किसी जमाने में किया हुआ? हाँ. सीरियल नंबर कितना है? 8. The transaction of sale and leaseback transactions. एक मिनट. The transaction of sale and leaseback. The transaction of sale and leaseback is accounted as under as under ये सेल एंड लीज बैक क्या रहता? बेसिकली टैक्स प्लानिंग के लिए किया जाता है सेल एंड लीज बैक, कि जो एसेट मैंने आपको बेचा वही एसेट मैं वापस आपसे लीज पे ले रहा हूँ. अल्टीमेटली एसेट घूम फिर के मेरे पास ही जाने वाला. आई एम सेलिंग इट टू यू एंड आई एम टेकिंग द सेम एसेट ऑन लीज फ्रॉम बैक टू यू. बोल तो क्या होगा? मैं आपको बेचा, मैं सेलर हो गया, आप हो गए बायर, और वही आप मेरे को वापस लीज पे दे रहे, तो आप हो गए लेसर, मैं हो गया लेसी. वो तो दोनों ड्यूअल रोल में, डबल रोल में. आई एम सेलर एज वेल एज लेसी एंड यू आर बायर एज वेल एज लेसर. तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी? हाउ इट विल बी अकाउंटेड? लिखो. ए, फाइनेंस लीज. A, finance lease. Under that, write down in the books of seller in the books of seller that is lessee, comma, any excess or deficiency
of sale proceeds over carrying amount of an asset will be deferred and amortized over the lease term in proportion of the depreciation on leased asset in proportion of the leased asset. क्या है ये एग्जैक्टली? अगर फाइनेंस लीज है तो उस केस में मेरे को बताओ कि एसेट किसके बुक्स में दिखाते हैं? लेस्सी के बुक्स में। तो जिसने बेचा उसके बुक्स में वापस एसेट दिखेगा ना। तो जो एसेट मैंने आपको बेचा वही एसेट मैंने वापस फाइनेंस लीज पे आपसे लिया, तो वापस एसेट मेरे ही बुक्स में दिखेगा ना। तो जो एसेट मैंने बेचा वही मेरे बुक्स में वापस दिखना है। तो पॉइंट क्या लिखा के दिया? एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ सेल प्रोसीड्स ओवर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। जो भी सेल प्रोसीड्स एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है, इनमें का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मतलब प्रॉफिट या लॉस बोल के तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे हम मेरे बुक्स में। इट विल बी स्प्रेड ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द लीज्ड एसेट। क्यों? तो वो एसेट वापस मेरे बुक्स में आया ना, तो मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेने वाला हूँ। तो भाई वो डेप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में ये जो भी डिफरेंस है किसका? सेल प्रोसीड्स एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इन माय बुक्स, इनमें का डिफरेंस हम स्प्रेड आउट करेंगे ओवर द लीज टर्म। एक साल का प्रॉफिट है, एक साल का लॉस नहीं माना जाएगा। समझो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट बुक्स में समझो 5 लाख रुपए, लेकिन मैंने तुमको बेचा वो समझो 4 लाख रुपए में। तो वैसे देखा जाए तो 1 लाख रुपए का मेरा लॉस है ना, 1 लाख रुपए का मेरा लॉस है। बट ये लॉस मैं तुरंत रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, क्यों? तो कैरिंग अमाउंट 4 लाख है, तो डिप्रिसिएशन भी तो 4 लाख पे जाने वाला ना ओवर द लीज टर्म। तो डिप्रिसिएशन भी तो कम आने वाला है हर साल, क्यों? तो कैरिंग अमाउंट ही कम है। समझ में आ रहा है क्या? सॉरी, कैरिंग अमाउंट 5 लाख है, 5 लाख है, तो 5 लाख का डिप्रिसिएशन तुम लेने वाले हो, राइट? तो उसी प्रोपोर्शन में फिर तुम ये लॉस भी P&L को डेबिट करोगे। यू विल डेबिट इट टू P&L अकाउंट इन सेम प्रोपोर्शन। प्रॉफिट हुआ तो भी सेम, मतलब 5 लाख का कैरिंग अमाउंट है एंड यू सोल्ड एसेट फॉर 6 lakhs, तुमने 6 लाख में बेचा, तो इस केस में क्या होगा? 1 लाख का प्रॉफिट होगा। तो वो 1 लाख का जो प्रॉफिट है वो तुम क्या करोगे? इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन यू विल स्प्रेड आउट। ये हो गया फाइनेंस लीज के केस में। बी, ऑपरेटिंग लीज। Operating lease. Under that situation 1, सिचुएशन 1 का हेडिंग लिखो, सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट
is equal to fair value is equal to fair value. बोल तो जितनी फेयर वैल्यू है उतने पेज बेचा है एसेट को. अब बेटा जितनी फेयर वैल्यू उतने में बेचा है तो मेरे को बोलो जरूरी है क्या बुक्स में बुक वैल्यू जो थी वो फेयर वैल्यू की जितनी रहेगी. तो बुक वैल्यू फेयर वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है ना, और तुम्हारा ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो फेयर वैल्यू पे हुआ, तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है. लिखो recognize the profit or loss immediately. Recognize the profit or loss immediately. B. Situation 2. Situation 2. Selling price is more than fair value. Selling price is more than the fair value. Next line. Differ excess of sales price. Differ excess of sales price over fair value and amortize it in proportion to lease payments over the expected period of use. Over the expected period of use. हो गया? Situation 3. Selling price is less than the fair value. Selling price is less than the fair value. तुमने फेयर वैल्यू से कम में बेचा तो उसमें तो लॉस हो रहा है, बट क्या होता है ना, तुमने बेचा भी तो सस्ते में ना, तो सामने वाले को अब तुम रेंट पे करने वाले उसका, कि तो तुमने लीज पे लिया ना वही एसेट वापस, तो उसको भी तो सस्ते में मिला है, तो लीज रेंटल भी तो कम लगेंगे. तो ये लॉस जो है इट इज गोइंग टू बी कॉम्पेंसेटेड इन फ्यूचर बाय लेसर अमाउंट्स ऑफ लीज पेमेंट्स. लिखो नेक्स्ट लाइन. इफ द लॉस इज कॉम्पेंसेटेड by future lease payments at below market price, then defer it and amortize
in proportion to lease payments, over expected period of use. Over expected period of use. फुल स्टॉप और उसमें आगे कंटिन्यू करो. Otherwise, recognize the loss immediately. बोल तो अगर ऐसा नहीं होने वाला, फ्यूचर में तुम कम लीज रेंटल पे करोगे तो फिर लॉस वो तुरंत रिकॉग्नाइज कर लो. हाँ, लेकिन मैंने आज तुमको सस्ते में बेचे, फेयर वैल्यू से कम में, तो कल को जाके तुम मेरे से रेंटल भी कम ले रहे हो उस एसेट का, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में मेरा जो आज लॉस हो रहा है ये कॉम्पेंसेट होने वाला है ना फ्यूचर में, कम पे करके रेंटल, तो आई डेफर इट, उसको मैं डेफर करूंगा. समझ में आ रहा है? पक्का? चलो प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर. First problem. Akshat International Limited has given a machinery on lease for 36 months and its useful life is 60 months. Cost and fair value of the machinery is 5 lakhs. Amount will be paid in 3 equal annual installments and the lessee will return the machinery to lessor at termination of lease. The unguaranteed residual value at the end of 3 years is 50,000. IRR of investment is 10% and present value of annuity factor of 1 rupee at the end of 3 years at 10% IRR is 2.4868 and present value of rupee 1 due at the end of third year is 10% is 0.7513. You are required to comment with the reason whether the lease constitute finance lease or operating lease. If it is finance lease, calculate unearned finance income. लिखो, इसका आंसर तुमको सिस्टमेटिकली लिखा के देता हूं. लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ लीज. यही सेम टाइप का प्रॉब्लम कंटिन्यूसली एग्जाम में आया हुआ है. डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ लीज. नेक्स्ट लाइन लिखो, ये सामने का देख के मत लिखो, ये फिगर्स अलग है, ये क्वेश्चन अलग है. fair value of the asset
is 5 lakhs and the unguaranteed residual value is rupees 50,000. Next line. Present value of residual value at the end of third year is equal to rupees 50,000 into 0.7513 37,565. तो जो थर्ड ईयर के एंड में रेसिडुअल वैल्यू आ रही है 50,000 रुपए की, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया? 37,565. नेक्स्ट लाइन. देयरफॉर present value of lease payments recoverable is equal to rupees 5 lakhs minus 37,565. तो कितना रिकवर करना है लीज रेंटल के थ्रू अपने को? 462 435. Next line. Therefore, the percentage of present value of lease payment to fair value of the asset is equal to, वो क्या था, रुपीज 435 डिवाइडेड बाई 5 lakhs इंटू 100, 92 पॉइंट जो भी आता है लिख दो, 92.487%. Since it substantially covers the major portion of lease payments and life of the asset comma the lease constitutes a finance lease. Calculation of unearned finance income.
Calculation of unearned finance income. Annual lease payment is equal to rupees 462,435 divided by 2.4868. One lakh 85,956. तो इतना एनुअल लीज रेंटल आने वाला है. अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया सर? तो प्रॉब्लम में दिया है कि 10% रिटर्न चाहिए, 10% से कैलकुलेशन किया एन्यूटी का, तो ये आंसर आता है 185,956 आया. नेक्स्ट लाइन, therefore gross investment in the lease is equal to, therefore gross investment in the lease is equal to 185,956 into 3 years. हर साल है ना उतना. 185,956 into 3 years plus 50,000. करो कैलकुलेट. 6,07,858 868. Therefore unearned finance income therefore unearned finance income is equal to, ये जो भी अभी ऊपर फिगर आई थी वो कितनी थी? 6,07,868 minus rupees 5 lakhs. हो गया? कितना है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम? 1,07,868. चलो अगला क्वेश्चन तो वहीं के वहीं सॉल्व करना है. बताओ क्या करना है. फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है वो बताना है सिर्फ. Lessee has the option to purchase the asset at lower than fair value at the end of lease term. It will be finance lease. So number 1, finance lease. Economic life of the asset is 7 years, lease term is 6 years. That's it. 7 में से 6 साल लेसी यूज करने वाला है. It will be finance lease. मेजर इकोनॉमिक लाइफ में किसके पास है एसेट? लेसी के पास है. Economic life of the asset is 6 years, lease term is 2 years, but the asset is of special nature and has been procured only for the use by lessee. Finance lease special nature का है ना, लिखा के दिया ना रे मैंने सब ये.
present value of minimum lease payments is x, fair value of the asset is y. अगर x is equal to y then it is finance lease. लिखो, if x is equal to y or where x is substantially equal to y, x is substantially equal to y, then it is a finance lease. Okay. Next, third problem. Annual lease rental 40,000 at the end of each period. Lease period 5 साल. Guaranteed residual value 14,000. Fair value at the inception of the beginning of the lease is 1,50,000. Interest rate implicit on lease is 12.6%. The present value factors at 12.6% are 0.89, 0.79. ये सब दिए हुए हैं. Show the journal entry to record the asset taken on finance lease in the books of lease. लिखो ना, as per AS 19, as per AS 19, as per AS 19, the finance lease will be recorded in the books of lessee at lower of fair value of the asset at the inception of the lease, at lower of fair value of asset at the inception of the lease, or present value of minimum lease payments. Or fair value of minimum lease payments. Fair value नहीं, present value of minimum lease payments. अब बेटा प्रॉब्लम में अपने को फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट तो दिया हुआ है, कितना है 1,50,000. लेकिन अभी ये जो मिनिमम लीज पेमेंट्स है उसका प्रेजेंट वैल्यूएशन करना पड़ेगा, विच इज वेरी इजी. लिखो, ईयर lease payments discounting factors at the rate of 12.6%.
and present value. Present value. फर्स्ट ईयर कितने साल है टोटल? 5 साल है ना, और हर साल कितना कितना है? 40,000 का लीज रेंटल है। ध्यान रहे बेटा, इसमें गलती हो सकती है, गलती बोलने के बजाय भूल जाएंगे तुम लेना। 5th ईयर के एंड में रेसिडुअल वैल्यू भी आने वाला है 14,000 का दिया हुआ, तो वो भी तो लेना पड़ेगा ना। तो हर साल 40,000 का रेंटल तो आ ही गया, एंड 5th ईयर में 14,000 का रेसिडुअल वैल्यू। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर्स क्या क्या दिए, जो दिए प्रॉब्लम में वही लो, वो तो राउंडिंग ऑफ का फर्क नहीं आएगा फिर। 0.89, 0.79, 0.70, 0.622, 0.552 एंड लास्ट में वापस पॉइंट करो कंप्लीट, और मेरे को बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितना आ रहा है। वन लाख 49,888। as the present value of minimum lease payments, as the present value of minimum lease payments is less than the fair value of the asset, comma, the following accounting entry will be passed. Leasehold asset account debit, leasehold asset account debit to, कितना अमाउंट लिखेंगे, 1 मिनट। लीजहोल्ड एसेट अकाउंट डेबिट 149,888 to lessor account 149,888। हो गया?
लास्ट सेल एंड लीज बैक है, ओरली भी दे सकते हैं आंसर या लिख लेते हैं अपन फटाफट. X Limited sold JCB machine having WDV of 50 lakhs to Y Limited for 60 lakhs. WDV कितना था? 50 लाख और बेचा कितने में? 60 लाख में. And same JCB was leased back by Y to X. The lease is operating lease. Comment according to relevant accounting standard if selling price of 60 lakhs is equal to fair value. Situation 1 तुमको जो लिखा के दी वो, अगर सेल प्राइस एंड फेयर वैल्यू सेम है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. सो 50 लाख का WDV है एंड बेचा कितने में? 60 लाख, तो 10 लाख का प्रॉफिट है विच विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. लिखो ए, एज द मशीन इज सोल्ड, as the machine is sold at its fair value, comma, the profit of rupees 10 lakhs, the profit of rupees 10 lakhs will be recognized immediately. Will be recognized immediately. आया? सेकेंड वन क्या लिखा है? फेयर वैल्यू इज 50 lakhs एंड सेल प्राइस इज 45 lakhs. अब सेल फेयर वैल्यू 50 लाख है एंड बेचा कितने में? 45 लाख में. अब उस केस में क्या होगा? यू आर सेलिंग इट एट अ प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू. सो बुक वैल्यू कितनी है एसेट की? 50 लाख ही है. WDV 50 लाख है ना रे, तो 50 लाख का फेयर वैल्यू बेच रहे 45 lakhs में, तो 5 लाख का लॉस है. ये जो 5 लाख का लॉस है इट विल बी डेफर्ड ओवर द लीज टर्म. लिखो बी. एज द सेलिंग प्राइस is less than the fair value comma the loss of 5 lakhs, the loss of 5 lakhs will be deferred over the lease term. Over the lease term. नेक्स्ट, फेयर वैल्यू 55 लाख है, सेल प्राइस 62 lakhs है. अब बुक वैल्यू कितनी है एसेट की? 50 लाख है. वो तो टोटल प्रॉफिट तो 12 लाख है, बट फेयर वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस में का डिफरेंस डिफर होता है. एंड फेयर वैल्यू एंड बुक वैल्यू इसमें का तो तुरंत रिकॉग्नाइज करना है. समझ में आ रहा है? वापस बोलता हूँ, बुक वैल्यू कितनी है? WDV 50, बेचा कितने में? 62 में, बट फेयर वैल्यू 55 है ना. 50 और 55 का फर्क जो है 5 लाख का, वो तो P&L में जाएगा डायरेक्ट. बट ओवर एंड अबव फेयर वैल्यू जो सेलिंग प्राइस सही है दैट विल बी डेफर्ड ओवर द लीज टर्म. लिखो
out of total profit of rupees 12 lakhs, out of total profit of rupees 12 lakhs, comma, difference between WDV, difference between WDV and the fair value that is rupees 5 lakhs, that is rupees 5 lakhs will be recognized as profit immediately, will be recognized immediately, and excess of selling price over fair value will be deferred over the lease term, will be deferred over the lease term. लास्ट, अब फेयर वैल्यू 45 लाख एंड सेल प्राइस 48 लाख से उल्टा होगा, 5 लाख का लॉस तुरंत रिकॉर्ड होगा एंड 3 लाख का प्रॉफिट स्प्रेड आउट करेंगे. लिखो डी. The difference between fair value and WDV that is loss of 5 lakhs, will be recognized immediately, and excess of selling price over fair value of rupees 3 lakhs will be accounted as deferred profit, over the lease term, Done? समझा? यस शुभम, बराबर है.
बी पॉइंट में वो आएगा कि अगर लॉस फ्यूचर में कॉम्पेंसेट नहीं हो रहा है तो उस केस में वो तुरंत रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे वन लाइनर आंसर लिखने इसलिए मैंने वो उतना शॉर्ट में लिखा के दिया है. एनी प्रॉब्लम गाइज? नो, टेक अ ब्रेक, कम बैक.
Yes, guys. So after completing this technical AS 19, let's go to a theoretical AS 15 employee benefits. लिखो AS 15 employee benefits. लिखो first point. Objective of AS 15 is to prescribe the accounting and disclosure for employee benefits number 2 AS 15 requires an enterprise to recognize next line a liability when an employee has provided service in exchange for employee benefits to be paid in future. B. An expense when the enterprise consumes the economic benefit arising from the service provided by an employee in exchange for employee benefits. ये जो अभी अपन ने पॉइंट लिखा ना, ये पॉइंट ही पूरे AS 15 का बेस है. पूरा डिस्कशन इसी के आजू बाजू में घूमेगा.
क्या होता है, एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स पे होते हैं, तुम सिर्फ सैलरी या वेजेस पे फोकस मत करो, एम्प्लॉय को अलग अलग तरीके से पेमेंट्स किए जाते हैं। कुछ बेनिफिट्स है जो तुरंत दिए जाते हैं, जैसे सैलरी है, सैलरी इज पेड इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथली अगर है तो मंथली पे होगा। कई जगह पे सिस्टम बेटा महीने में 2 बार पेमेंट का भी होता है, अगर लेबर है तो। लेबर को क्या है ना कि पेमेंट्स कम रहते हैं ऑलरेडी, तो वो महीने भर का पेमेंट का वेट नहीं कर सकते, तो उनको ना 15 दिन में पेमेंट देना पड़ता है, एक एडवांस अमाउंट दी जाती है। तो सैलरी वेजेस ये पेमेंट जो है ये रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस होते हैं। लेकिन कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या होता है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उस टाइम पे उसका पेमेंट आएगा ना। अब भला कितना पेमेंट होगा रिटायरमेंट के टाइम पे, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ ईयर सर्विस पे। तो 1 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई तो उसकी वजह से जो पेमेंट करना पड़ने वाला है वो आज नहीं, रिटायरमेंट के टाइम पे करना पड़ने वाला है। कई बार कुछ पेमेंट्स ऐसे रहते हैं रिटायरमेंट तक नहीं, इन बिटवीन पे होते हैं। इन बिटवीन पे होते हैं बोल तो किसी की 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई तो उसको कुछ पेमेंट कंपनी के सर्विस रूल में है कि भाई 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई तो एक उसको, लेट्स से जस्ट एक एग्जांपल पर्पस की 5 तोला सोने का कॉइन दिया 50 ग्राम का, तो 10 साल सर्विस कंप्लीट हो गई, तो 15 साल कंप्लीट हो गई तो और कुछ रहेगा, 20 साल कंप्लीट हो गए तो उसको मे बी फॉरेन टूर रहेगा विद फैमिली के साथ में। तो ऐसे अलग अलग तरीके से पेमेंट्स होते हैं। मतलब सर्विस वो रेंडर करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट उसके बेनिफिट्स तुरंत उसको दिए जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। दोज आर स्प्रेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिल ही इज इन सर्विस एज वेल एज आफ्टर ही गेट्स रिटायर्ड। तो पॉइंट ये है कि इसका अकाउंटिंग बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तुम सिर्फ सैलरी एंड वेजेस P&L को डेबिट करोगे, इस साल जितना पे हुआ उतना, ग्रेचुइटी वगैरह जब पे करेंगे तब देखेंगे, ऐसे चलेगा क्या? ग्रेचुइटी भाई रिटायर हो रहा है बोल के नहीं दे रहे, ग्रेचुइटी इतने साल की सर्विस हुई बोल के दे रहे। तो हर साल के सर्विस का उसमें कंट्रीब्यूशन है ना ग्रेचुइटी में, तो अकॉर्डिंगली तुमको हर साल उसकी प्रोविजन बनानी पड़ेगी ना। तो ये एएस यही बोल रहा है कि भाई जो भी सर्विस कंप्लीट हो रही है उसके लिए जो भी पेमेंट्स करने पड़ने वाले, भले वो फ्यूचर में पे करो तुम, उसकी लाइबिलिटी आज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बेटा जहां पे ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, तुम्हारे सिलेबस में था क्या ग्रेचुइटी एक्ट? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था क्या? मतलब इंटर के सिलेबस में ही लॉ में ये पहले तो था यार, रेफरेंसेस है ये तो पहले था, मेरे को याद, मैंने पढ़ा हुआ याद आता है मेरे को, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वगैरह तो नहीं है। ओके कोई बात नहीं, बढ़िया है। नहीं है तो सो ग्रेचुइटी है। अभी ग्रेचुइटी ये जिनको भी एप्लीकेबल है ग्रेचुइटी एक्ट, बोनस एक्ट, बोनस तो चलो फिर भी अपन समझ सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बोनस ग्रेचुइटी ये पेमेंट्स जिनको एप्लीकेबल है उनके लिए तो हर साल P&L डेबिट होना है, भले उस साल ग्रेचुइटी पे हुई ना हुई। द रीजन बीइंग सर्विस कंप्लीट हो गई ना उस साल की वो एम्प्लॉय की, नाउ ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी ऑफ दिस अमाउंट, इतना इतना अमाउंट उसको फ्यूचर में देना पड़ेगा। भला प्रोविजन भी करते हो और बहुत केयरफुली करनी पड़ती है प्रोविजन, क्यों तो प्रोविजन तुम आज बना रहे, पेमेंट हो सकता है 15 साल बाद रिटायरमेंट है, हो सकता है 20 साल बाद रिटायरमेंट है, तो पेमेंट 20 साल बाद है। यहाँ पे एक्चुरियल कैलकुलेशंस किए जाते हैं, तो एक्चुरियल वैल्यूएशंस भी यहाँ पे इस एएस में आएगा। So whenever an employee renders a service, then at that time only for any kind of payments to be made against that service in future, liability has to be created, liability बनानी पड़ेगी। और जब उसके सर्विस का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है उस साल उसको एक्सपेंस बोल के भी दिखाना पड़ेगा। ऑन वन हैंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स arising in current period but payable in future period will be expense for the current period and liability to be paid in future। काय बोलते हो, कहता है का इस साल जो भी सर्विस उसने दी उस सर्विस के लिए जो भी अमाउंट पेएबल रहेगा दैट विल बी एक्सपेंस, एंड जो अमाउंट इस साल में ही नहीं फ्यूचर में पेएबल रहेगा वो लाइबिलिटी बोल के भी तो दिखाना है ना। वही पॉइंट अभी लिखा हमने, दैट AS 15 रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू रिकॉग्नाइज अ लाइबिलिटी व्हेन एन एम्प्लॉई हैज प्रोवाइडेड सर्विस इन एक्सचेंज फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स टू बी पेड इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो पे होने वाले बट उसकी सर्विस उसने अभी रेंडर कर दिया है तो वो अभी अपने को लाइबिलिटी बोल के दिखाना पड़ेगा।
एंड उसने जो सर्विस रेंडर किया उसका बेनिफिट अगर इस साल अपने को मिल रहा है तो इस साल का एक्सपेंस भी है. सो ऑन वन हैंड इट इज एक्सपेंस, ऑन द अदर हैंड इफ इट इज नॉट पेड इमीडिएटली टू बी पेड इन फ्यूचर इट इज अ लाइबिलिटी. आज पेएबल है तो पे कर देंगे अपन, बट अगर फ्यूचर में पे होने वाला तो लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी ना. इसीलिए कॉर्पोरेट्स में हर साल P&L को ग्रेच्युटी और ये सब डेबिट होते हैं. रादर बेटा आपने देखा है, आप सीख चुके हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं. शेड्यूल 3 के P&L के स्टैट्यूटरी फॉर्मेट में एम्प्लॉय बेनिफिट्स का हेडिंग ही सेपरेट है. उसमें सारे ये हेडिंग्स आते हैं, सैलरी, वेजेस, ये सब सब. लिखो सीरियल नंबर 3. एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंक्लूड short term employee benefits, post employment benefits, other long term employee benefits, termination benefits. शॉर्ट टर्म में जो पे होते हैं वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. क्या क्या आएगा इसमें? सैलरीज, वेजेस, पेड एनुअल लीव्स, पेड एनुअल लीव्स, परक्विजिट्स. परक्विजिट्स तुमको अब हो गया रहेगा ना टैक्स में. ये शॉर्ट टर्म में जो पे होते वो शॉर्ट टर्म में मतलब 12 महीने के अंदर पे होने वाले पेमेंट्स. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में क्या आएगा बेटा? ग्रेच्युटी, पेंशन, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स? जो लॉन्ग टर्म में पे होंगे वो, जैसे मैंने बोला कि वो पर्टिकुलर सर्विस कंप्लीट होने के बाद जो पे होता है वो, तो जिसमें अपन लिख सकते हैं कि लॉन्ग सर्विस लीव,
jubilee or other long-term benefits वो सिल्वर जुबली हो सकता है, गोल्डन जुबली हो सकता है। नॉर्मली गोल्डन जुबली तो कोई जाएगा नहीं, 50 साल की सर्विस कहाँ करेंगे। 50 साल ना गोल्डन जुबली बोल तो, सिल्वर जुबली 25 साल। फिर क्या आता आगे, 75 ईयर्स को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, डायमंड जुबली, बराबर है बराबर है, डायमंड जुबली एंड देन सेंचुरी, डायरेक्ट सेंचुरी होता है। नहीं, डायमंड जुबली तक भी कौन काम करेगा रे, 75 साल सर्विस के, तो सर्विस में लगता है आदमी 20-22 की एज में, और 75 साल आगे, बाप रे। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, compensation payable on termination, compensation payable on termination. Next, point number 4. Employee benefits include benefits provided to either employees or their spouses comma children or other dependents. And may be settled by payments made either, next line A, directly to the employees comma to their spouses, देर बोल रहे इसलिए स्पाउसेस है, हाँ एक रहेगा तो स्पाउसेज, तेरे पास स्कोप है ना, टू देयर स्पाउसेस, फोर आर अलाउड ना एज पर मुस्लिम लॉ, 4। हिंदू बहुत ही ऑर्थोडॉक्स रह गए रे, है ना, लीगली 4, to their spouses, comma children or other dependents or their legal heirs or nominees
or or B to others such as trust, insurance companies, ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज। अभी देखो कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्लान रहता है, तो एम्प्लॉय के इंश्योरेंस बेनिफिट्स के लिए एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए एम्प्लॉयर पे करता है। ईएसआई आया रहेगा तुमको, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, टैक्स में वगैरह कहीं। तो अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के पेमेंट्स करने हैं, या प्रोविडेंट फंड का ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन ट्रस्ट को देना है, तो वो भी तो फिर उस साल में जो पेएबल है वो शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉय को पे करने वाले एम्प्लॉय का बेनिफिट ही हुआ ना, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट ओनली। सो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉय को ही पे हो, उसके स्पाउस को हो सकता है, उसके बच्चों को हो सकता है, उसके डिपेंडेंट्स को हो सकता है, डेथ हो गई तो उनके लीगल हेयर्स को हो सकता है, एंड इवन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय वो ट्रस्ट को, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, इंश्योरेंस कंपनीज को भी पेमेंट दिया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉय को ही दिया जाएगा। नेक्स्ट, सीरियल नंबर 5। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स are payable within 12 months are payable within 12 months after the service is provided by the employee, after the service is provided by the employee, full stop। नो, वह उसी में कंटिन्यू करना है। नो एक्चुरियल अजम्पशंस, नो एक्चुरियल अजम्पशंस are required to measure the obligation, to measure the obligation and are measured on an undiscounted basis। सीरियल नंबर नेक्स्ट, short term employee benefits will be accounted as an expense and a liability if not paid immediately,
if not paid immediately. तो एक तो एक्सपेंस बोल के दिखाना है उसको, क्यों तो शॉर्ट टर्म में ही पे होने वाले, एंड अगर तुरंत पे नहीं हुए तो उसको लाइबिलिटी बोल के दिखाओ, आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाओ। अगर तुरंत पे हो गए तो फिर तो सवाल ही नहीं आता, इट इज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और अगर पेएबल है, पे नहीं किया तुरंत, तो फिर अपन एंट्री करते हैं सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सो ऑन वन हैंड इट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस, ऑन द अदर हैंड इट विल बी शोन एज लाइबिलिटी। सीरियल नंबर 7, post employment benefit plans. Post employment benefit plans are categorized as under जो एम्प्लॉय के पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। दोज विल बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। Those two categories will be defined contribution plans and defined benefit plans. As the employer's contribution is fixed, it is accounted as an expense when such contribution is accrued and a liability since it is payable post employment. अब इसमें भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो उसके नाम में ना उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए तुमको। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड है, हम इतना देंगे, फिर उसका जब रिटायरमेंट के टाइम पे वैल्यूएशन जो होगा सो होगा। डिफाइंड बेनिफिट में वैसा नहीं होता। डिफाइंड बेनिफिट में एम्प्लॉय जब वो रिटायर होगा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट के टाइम पे कितना देना वो फिक्स है। अब तुम आज प्रोविजन बनाते हो तो कम ज्यादा हो सकता ना, उसमें प्रॉब्लम आएगा। किसमें? डिफाइंड बेनिफिट में। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड फिक्स्ड है, आज तुम्हारी जितनी सैलरी है उसका 12% एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, दैट्स इट।
अब तुम्हारी सैलरी बढ़ गई तो ये 12% बढ़ जाएगा, सैलरी कम हो गई तो 12% कम हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी फिक्स है ना यहाँ पे, तो दैट विल बी शोन एज एन एक्सपेंस वेन एवर द कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्रूड। तो इस साल भर में जितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है वो इस साल का खर्चा, अब वो तुरंत पे हो रहा है क्या? नहीं, तुरंत पे नहीं हो रहा, तो इट इज शोन एज अ लाइबिलिटी बिकॉज इट विल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। काय बोलते कहते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ, मेरे को बताओ बेटा, इवन इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एक्चुअरियल अजम्पशंस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्यों? तो यहाँ पे फिक्स्ड है, इस साल मेरे को इतना देना है, उतना खर्चा मैंने दिखा दिया। ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सो हियर अगेन नो एक्चुअरियल अजम्पशंस आर इन्वॉल्व। No actuarial assumptions are to be made. जैसे मैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में जाता हूं, provision is to be made on the basis of actuarial assumptions, on the basis of actuarial assumptions। अब यहाँ पे तो तुमको एक्चुअरियल अजम्पशन करने पड़ेंगे। एक्चुअरियल अजम्पशंस बोल तो क्या रहता है, एम्प्लॉय कितने दिन तुम्हारे साथ रहेगा मालूम थोड़ी है, कब भी छोड़ के जा सकता है। अच्छा, डेथ हो सकती कभी भी, यू नेवर नो। कंपनी में कोई कॉन्टीजेंसी आ गया, हो सकता है कि मेजर एम्प्लॉयज का जॉब चला जाएगा, तो ये आगे का है ना पूरा। तो ये जो अजम्पशंस किए जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने साल नॉर्मली आदमी रहता है, कब डेथ होता है, क्या होता है, ये सारे सारे कैलकुलेशंस करके इंश्योरेंस में जो कैलकुलेशंस किए जाते हैं ना, वो उसी को एक्चुअरियल वैल्यूएशंस बोलते हैं, एक्चुअरियल अजम्पशंस बोलते हैं। अभी बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान रखनी पड़ती है कि मेडिकल फैसिलिटीज कैसे है उस एरिया में। मेडिकल फैसिलिटीज अगर बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाता है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एक्चुअरियल कैलकुलेशंस किए जाते हैं एंड अकॉर्डिंगली डिफाइंड बेनिफिट प्लान का प्रोविजन बनाया जाता है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी टफ कैलकुलेशंस टू अंडरस्टैंड। एनीवे, अपने सिलेबस में कैलकुलेशन का पार्ट वैसे भी नहीं है, और वो इवन फाइनल में भी नहीं है। वो तो एक्चुअरीज जो प्रोफेशन है, मैथमेटिकल है, उसमें सब किया जाता है। तो अपने को तो यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है। तो प्रोविजन तो हर साल की हर साल बनानी पड़ने वाली है, इवन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स की भी प्रोविजन विल बी मेड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, बट दैट विल बी बेस्ड ऑन एक्चुअरियल अजम्पशंस। तो एक्चुअरियल अजम्पशंस उसमें आएंगे। कहते हैं, समझते हैं? पक्का? यस। नेक्स्ट, अगला कैटेगरी कौन सा था? नेक्स्ट कैटेगरी वाज अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। लिखो सीरियल नंबर। The accounting for other long-term employee benefits, should be accounted in the same manner as defined benefit plans are accounted in same manner as defined
benefit plans are accounted. वापिस वही बात है ना, अभी जुबली, अब जुबली तक एम्प्लॉय रहेगा इसकी क्या गारंटी है? वो तो रह भी गया तो अपने कंपनी में रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? बराबर है। अभी बहुत बहुत सारी इसमें चीजें रहती है कि नॉर्मली समझो एम्प्लॉय नहीं है तो उसके स्पाउस को दिया जाता है, अब स्पाउस की डेथ पहले हो गई है तो, और फिर एम्प्लॉय की डेथ हो गई। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? फैमिली पेंशन का कंसेप्ट कैसा है? फैमिली पेंशन का कि एम्प्लॉय को मिलेगा जब तक वो है, और उसकी डेथ के बाद में उसके स्पाउस को मिलता है। हाफ मिलता है एम्प्लॉय को, स्पाउस को मिलता है 1/4। अब स्पाउस की डेथ पहले हो गई तो बच्चों को मिलता क्या? नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो अब ये सारे क्या है ना, अजम्पशंस है। क्या होगा ये किसने देखा है? तो भाई इन जनरल एवरेजिंग किया जाता है मैथमेटिकली, एंड वो कैलकुलेशंस करके, अजम्पशंस करके कैलकुलेट करते हैं। तो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जो है, लॉन्ग टर्म, अब वो सेम ही है। लॉन्ग टर्म में पता नहीं ना, लॉन्ग टर्म में वो कहाँ रहेगा, कितना रहेगा उस टाइम पे। अभी समझो फॉर एग्जांपल सेक 5 तोला मैंने सोने का कॉइन बोला, अब उस टाइम पे क्या रेट रहेगा सोने का क्या मालूम? आज तो लेके नहीं बैठते ना अपन। समझ में आ रहा है? तो भाई वो भी तो फिर अजम्पशन करना पड़ेगा क्या होगा। तो उसमें एक्चुरियल रिस्क भी है, फाइनेंशियल रिस्क भी है, दोनों रिस्क इन्वॉल्व है। तो वो सारे कैलकुलेशंस किए जाते हैं कहाँ पे? एक तो पोस्ट ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, दूसरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में झंझट नहीं है भाई, उस टाइम पे सोने का रेट क्या रहेगा हमको कोई लेना देना नहीं। हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स है, हम इतना देने वाले हैं। हाँ, उतने में फिर जितना सोना आएगा उतना देंगे। उतने में 5 तोला आया तो 5 तोला मिलेगा, 6 तोला आया तो 6 तोला मिलेगा। आए बोलते कहते। तो एक्चुरियल अजम्पशंस कहाँ कहाँ पे आए? डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स में। अरे भाई तब से क्या समझा रहा मैं? डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स एंड अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। लिखो। A termination benefit should be recognized as an expense, as an expense and a liability, and a liability when A, next line, A there is a present obligation, there is present obligation as a result of past event, as a result of past event. B, it is probable, it is probable that an outflow of resources, an outflow of resources embodying economic benefits, embodying economic benefits will be required, will be required to settle the obligation. And C,
A reliable estimate can be made and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation कहाँ थे ये तीन कंडीशन 29 में प्रोविजन के लिए तो ये प्रोविजन ही बनाने के ना अपने को ये सेटिस्फाई हो रहे तीन कंडीशन तो टर्मिनेशन बेनिफिट का तुम प्रोविजन बना दो वन मोर पॉइंट लास्ट पॉइंट where the termination benefits fall due more than 12 months after the balance sheet date they should be discounted using the discount rate. They should be discounted using the discount rate. बारह महीने से ज़्यादा पीरियड में अगर पेएबल है तो फिर उसका डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा ना, प्रेजेंट वैल्यूएशन पे लाना पड़ेगा। और 12 महीने में पेएबल है तो फिर जितना पेएबल है उतना प्रोविजन हम बना देते हैं। एकदम शॉर्ट में मैंने क्रिस्प जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने तुमको समराइज करके दिया है। एक्चुअल में एएस तो बहुत लेंदी है, ये सबसे बड़ा एएस है, रादर लेंदीएस्ट एएस इज एएस 15, बट मैंने उसको बहुत शॉर्ट में जितना जरूरी है उतना अच्छी लिखा के दिया है तुमको। आई थिंक अप टू 17 सब हो गए, अब 18 बाकी है, 19 हो गया, 19 हो गया ना, 18, 20, 21, 22, 23, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27, 28, 7 एएस बचे। कल टॉपिक लेके एएस ही कंटिन्यू करें। हाँ, बायबैक तो क्या घंटे भर में हो जाएगा, ठीक है। ये वीकेंड पे अपन कंप्लीट कर देंगे, प्लानिंग यही है दैट वी विल फिनिश बाय दिस सैटरडे। 30 सितंबर का वादा है ना वैसे भी। सी यू टुमारो, थैंक यू।